So Harith ibn Hammam went to Sana'a and he was looking for someone from which he can get some hadiya gift food, or from whom he can hear some adabi lataif which can cheer him up. And he met this person who was surrounded by a large group of people, and he was admonishing them. And he is narrating his admonition. We have come to this place. Previously, he said that you khulasa is you give preference to dunya over deen. You like all the worldly things, money and hoarding things, and clothings, etc. Food over Quran Sharif and Tilawat and good deeds. Now he says, تأمر بالعرف وتنتهك حماه وتحمي عن النكر ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. तू नेक काम का हुक्म देता है और खुद उसकी बाड़ को फाड़ देता है, और बुरे काम से दूसरों को मना करता है, बचाता है, और खुद उससे नहीं बचता, और तू लोगों को जुल्म से हटाता है, फिर तू खुद जुल्म पर छा जाता है, और तू लोगों से डरता है, हालांकि अल्लाह का हक ज्यादा है कि तू अल्लाह से डरे. तअमुरु बिल उर्फी, you command others to do good and you break its limits, fences, and you protect others and stop them from evil, and you do not protect yourself from those evils, and you remove people from zulm and turn them away, and you yourself cover it and go to do it yourself, and you fear people when Allah deserves more to be feared. تأمر بالعرف أمر يأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. To command, to instruct. Urf is ma'ruf, is called ma'ruf because a virtue is recognized and known by everyone. Everyone knows that this is a neki and this is virtue. Helping a poor person, guiding a blind person, assisting someone, bringing someone shopping. This is good because everyone recognizes as good. So, ma'ruf, commonly known good virtue, is called ma'ruf. And munkar is from ankara yunkiru inkaran, to deny, to reject. Because a sharif tabiyat denies and rejects bad things. Only a sharir tabiyat will like and approve of bad and evil things. So that is why a bad thing is called munkar. So you command people to do good and you break its limits. इंतहा का यंतही को इंतहाकन के माना पर्दा फाड़ देना, to tear apart. And hima means borderline, limit, and you break and tear apart its limits. وتحمي عن النكر, حما يحمي, حميا means bachana, to protect and to guard, and you protect and you stop people from nukr, munkar, evil. ولا تتحاماه, تحاما يتحاما, tahamiyan means बचाना, अपने आप को बचाना, खुद बचाना, तो तू खुद उससे अपने आप को नहीं बचाता. وتزحزح عن الظلم, and you turn people away from zulm. زحزح meaning हटाना. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Move away. You move people away from zulm. Tell them not to do injustice. Zulm, ظلم يظلم ظلما,
means وضع الشيء في غير محله. To place something in the wrong place is called zulm. So sins are also called zulm, and injustice and oppression, tyranny is also called zulm. So you turn people away, draw people away from zulm, ثم تغشاه, then you yourself cover it and go over it. غشية يغشى غشيانا के माना छा जाना, तू उस पर छा जाता है, तू खुद उसको करता है और अपने आप को उसमें मुलव्वस करता है. वतख्शन नास, और तू लोगों से डरता है, हालांकि अल्लाह का ज्यादा हक है कि तू अल्लाह से डरे. You fear people and you are scared of people, and you avoid evil when you are in the presence of people, but when you are alone you do evil stuff, whereas Allah is watching you and Allah deserves to be feared more. So this is in the Quran Sharif as well. وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, 22nd Sipara, 2nd page. ثم أنشد, फिर उसने शेर पढ़ा. अनशद युनशिदु इंशादन के माना शेर पढ़ना. असल में नशदा के माना ढूंढना, तलाश करना, टू सर्च. नशदतु दाल्ला के माना मैंने गुमशुदा चीज को तलाश किया. हदीस में है समिअ रजुलन यनशुदु दाल्लतन फिल मस्जिद फक़ाल ला वजदता, इला आखिर हदीस. नाउ नशीद is used for raising the voice, because when a person is announcing for something that he has lost, he raises his voice. भाई किसी ने ये चीज देखी है, यही कहता है कि ये चीज किसी है. Whose is this pen भाई? Who does this belong to? So you have to raise his voice. So nashada is also used for raising voice. Now when a person is singing some poetry, he has to raise his voice. This is why nasheed is called nasheed. So nasheed means some poetry which is sung, and anshada means to sing a poetry. And a person singing that rhyme is called a munshid. So anshada, to sing some poetry, nasheed is that poetry which is sung, and munshid is the one who prepares that. So inshadu shir means to compose poetry and to sing it. So thumma anshada, and then he sung the following couplets. Share padhe. Tabban li talibi dunya thana ilayhan sibaba ma yastafiqu gharaman biha wa farta sababa walau dara lakafahu mimma yarumu subaba. तबाही हो तालिबे दुनिया के लिए, मोड़ दिया उसने दुनिया की तरफ अपने झुकाव को. होश में नहीं आता दुनिया के इश्क की वजह से और इश्क के ज्यादा हो जाने की वजह से. हालांकि अगर वो जान लेता तो उसको काफी होता उसके मकसूद और मतलूब में से थोड़ा सा हिस्सा. Woe unto the seeker of dunya. He has turned towards it his careering and leaning. He does not recover due to his intense love for dunya and the excess of that love. Had he known, then a drop of what he is seeking would be enough for him. तब्बन तब्ब यतिब्बु तब्बन तबाबन के माना तबाह हो जाना, हलाक हो जाना. तब्बत यदा अबी लहब व तब. सो हलाकत है तालिबे दुनिया के लिए. Woe unto the seeker of dunya and worldly gains. Sana yasni saniyan, dunya is muannas of adna, and dana yadnu dunuwan means to be close. Qaruba yaqrubu. Okay, adna means aqrab, and dunya is its muannas. Dunya means qurba, and this dunya is called aqrab and qurba because it is close to us in comparison to the akhirat, because akhirat is distanced from us. So he has turned towards the dunya. His sana ilayhin sibaba, sana yathni thaniyan ki mana modna,
मुतवज्जे करना, he has turned towards it. इन सिबाबहू, इन सब्ब यनसब्बु इन सिबाबन के माना टूट पड़ना। असल में सब्बल मा के माना पानी को डालना, जैसे इस बोतल में से गिलास में डाले तो इसको कहते हैं सब्बा। और इन सब्बा के माना खुद गिरना, तो दुनिया की तरफ वो टूट पड़ा है। हिज मेन कंसर्न इज दुनिया दुनिया दुनिया, नथिंग बट दुनिया। उसको दुनिया के सिवा और कुछ पड़ी ही नहीं है, सिर्फ दुनिया के लिए वो जी रहा है, आखिरत की तो कोई फिक्र ही नहीं है उसको। So he has turned towards dunya, he's careering and he's leaning and he's pouring himself. He's pouring himself on the dunya. Ma yastafiqu gharaman biha, वो होश में नहीं आ रहा है। इस्तफाक यस्तफीकु इस्तिफाकतन, होश में आना, to come to your senses। अफाक युफीकु इफाकतन के माना भी होश में आना, तो वो होश में नहीं आ रहा है। He is not coming to his senses। gharaman biha, gharaman is maf'ul lahu, meaning like you say ضربته تأديبا للتأديب, तो ما يستفيق للغرام بها, he is not coming to his senses because of, due to his ishq of it। गरीम यगरमु, गुरमन literally means चिपक जाना, to stick to something। कुरान शरीफ में है इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, अज़ाब चिपकने वाला है, it will stick to him। Now then from sticking, gharima is used for ishq and love as well, because when a person loves someone or something, he sticks to it, he follows it around, he's always going there round and round that house of the mahbuba, like Majnoon। أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار। तो दीवाना बन गया है। तो he is not coming to his senses due to his love for dunya। وفرط sababa, farta sababa is also same maf'ul lahu, لأجل فرط sababa, and because of his excess। فرط يفرط فرطا means आगे बढ़ जाना, to go ahead, and his love for it has gone ahead and exceeded the limits। and sababa again, sabba yasubbu sabban के माना आशिक होना, and sabbun is sifat mushabbaha which means आशिक। in qasida burda you read ayahsibu sabbu anna al-hubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa mudharibi। ayahsibu sabbu, does the आशिक think, يحسب الصب أن الحب منكتم, that the love will hide away ما بين منسجم منه ومضطرب, between the tears that flow from his eyes and the burning which appears in him। So farta sababa, due to the excess of his love of dunya। ولو درى لكفاه, had he realized, had he known, दरा यदरी dirayatan means जानना, अगर वो जान लेता, had he realized and known, then lakafahu subabatun mimma yarumu, then a drop would be sufficient for him from what he desires। lakafahu, and its file is subaba, and mimma yarumu is connected to it। and rama yarumu, rauman means talaba yatlubu talaban, तलाश करना, तो उसको काफी होता उसमें से जो वो ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा। सुबाबा कहते हैं वो बचे हुए पानी को, इस गिलास में एक थोड़ा सा ड्रॉप रह गया हो तो उसको मैं चूस लूं, उसको कहते हैं सुबाबतुल मा, पानी, बचा हुआ पानी। तो वो एक ड्रॉप पानी, थोड़ा सा पानी, तो अगर वो समझता तो दुनिया से थोड़ा सा एक कतरा जो है वही उसको काफी होता। दुनिया में और क्या चाहिए, खाना पीना मिल गया, 2 टाइम की रोटी मिल गई तो बस इनफ है। उसमें हदीस में कान कद अफलह मन अस्लम व रुज़िक़ कफाफन व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आताहु, थोड़ी सी रोजी मिल गई वो काफी है, बहुत दुनिया 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 के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये उसने नसीहत की। समझ में आ गया यहाँ तक? उसका यहाँ उसकी स्पीच फिनिश हुई। आगे सुम्मा इन्नहु लब्बदा अजाजतहु व गय्यज़ मुजाजतहु, फिर उसने अपने गुबार को चिपकाया और अपने थूक को
सुखाया। वअतदल शक्वतहु वतअब्बत हरावतहु, और उसने अपने पानी के मशकीज़े को अपने बाजू पर लिया और अपनी लाठी को अपने बगल में दबाया। फलम्मा रनतिल जमाअतु इला तहफ्फुज़िही व रअत तअहुबहु लिमुज़ायलति मरकज़िही, फिर जब जमाअत ने देखा उसके सिमटने को और देखा उसके तैयार होने को अपने मरकज से हटने के लिए, अपनी जगह से हटने के लिए, अदखल कुल्लुम मिनहुम यदहु फी जैबिही, उनमें से हर एक ने अपना हाथ डाला अपने जेब में। फ़अफ़अम लहू सजरन मिन सैबिही, फिर भर दी उसके लिए एक डोल अपनी बख्शिश से। वक़ाल, और उसको कहा, इसरिफ हादा फी नफ़क़तिक औ फ़र्रिक़हु अला रुफ़क़तिक, इसको तू इस्तेमाल कर अपने अखराजात में या तक़सीम कर दे अपने साथियों पर। फ़क़बिलहु मिनहुम मुग़दियन वन्सना अन्हुम मुस्नियन, तो उसने कबूल कर लिया वो हदिया उनसे आंख बंद करते हुए और वो मुड़ा उनसे तारीफ करते हुए। Then he laid his dust and let his saliva and spit dry away, and he took upon his arm his water bottle, and he took under his arm his staff, his lathi. When the group saw his uprising and they saw his preparation to move away from his place of settling, sitting, each of them thrust their hand into their pocket and filled for him a bucket of his gift and said, use this in your spending or distribute it among your friends. So he accepted it from them with half closed eyes, and he turned away from them, giving thanks and praising them. लब्बद अजाजतहु, लब्बद युलब्बिदु तलबीदन के माना चिपकाना, to stick. तलबीदुल रअस या शारुल रअस means बाल में गोंद और जेल लगाना जिससे बाल चिपके रहें, बिखरे नहीं। हज्जतुल वदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए तो अपने बालों में तलबीद फरमाई थी, यानी ऐसे कुछ जेल लगा दिया था कि वो बाल जो है बिखर न जाएं, स्कैटर न हो जाएं, डिशेवल न हो जाएं, चिपके रहें। तो जैसे आजकल वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंडीशनर, तो लब्बदा के माना कोई ऐसा कंडीशनर लगा के बाल को चिपका देना। आजाजतुन के माना गुबार, गुबार जैसे घोड़ा दौड़ता है ना रेगिस्तान में, तो रेती ऊपर उड़ती है, धूल उड़ती है, तो आजाजतुन वो गुबार जो हवा से भी उड़ता है, दौड़ने से उड़ता है, तो उसने अपना गुबार चिपकाया। He stuck down his dust which was rising, he laid it, and गय्यज़, गाज़ा के माना सूख जाना, गाज़ल माउ वगीज़ल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जुदी वक़ील बुअदल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन. So गाज़ा means सूखना and गय्यज़ means सुखाना, to make dry. And mujajatahu is from majja yamujju majjan. Majja yamujju majjan means spit. أقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 7 سنين. Sahabi said, I still remember a spit which Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam spat in my face when I was still a 5-year-old boy, is in the hadith of Sahih Bukhari. So, majja, from majja is mujaja. Mujaja means saliva, spit. तो उसने अपनी सलाइवा और अपने थूक को सुखाया. This is kinaya of his silence. So up to now, his ghubar was
going up, and his mouth was wet due to speaking. So he just went silent, quiet, and all the ghubar settled down, and his mouth became dry. There was no, because he composed himself. He sat silence for a moment, for a while. और ऐसा बयान करते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, तो सब लोग जो हैं वो भी एक सन्नाटा और खामोशी पूरे मजमा में होती है, उसको बयान किया. उसके बाद वातदद शक्वतहु, इअतदद इज फ्रॉम आदुद, आदुद मींस बाजू, तो अपने बाजू पर लिया उसने. ही टुक अपॉन हिज आर्म, अपॉन हिज शोल्डर, शक्वतहु. शक्वा मींस मशकीजा, अपने पानी का मशकीजा और पानी की बोतल. He took upon his arm, his, ऐसे बोतल लटकाते हैं ना, on your arm, लटकने को होते हैं जैसे वाटर बॉटल, तो मशकीजा पानी की वाटर बॉटल उसने जैसे बैग लटकाते हैं, तो उसको उसके ऊपर लटकाया. And ta'abbata harawatahu. Ta'abbata is from ibit. Ibit means bagal, armpit. So ta'abbata means to put something under your armpit. So he took under his armpit harawatahu. Harawatun means lathi and staff. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा में एक आता है साहिबुल हरावा, meaning हुजूर लाठी वाले थे. He used to carry a walking stick with him in his old age. So he is called Sahibul Harawa, Sahibul Asa. So ta'abbata harawatahu, and he took under his armpit his walking stick, staff. Falamma ranat al jama'atu. Rana yarnu runuwan means to gaze, to stare, to look. So when the company and the jama'at gazed at his tahaffuz, simatna. Tahaffaza के माना जल्दी जल्दी उठ खड़ा होना, तैयार होना जाने के लिए. तो he is uprising and he is standing up from his place. हफीज़ यहफ़ज़ु हफ़ज़न के माना तेजी से जल्दी जल्दी, to rush and to run. So tahaffaza, he is rushing and he is uprising to move from that place and go home. And wara'at ta'ahubahu, and they saw ta'ahub. Ta'ahaba yatahabu ke mana to prepare. And they saw his preparing and preparation. Limuzayalati markazihi. Zala yazulu zawalan means hatana. And zayala yuzayilu muzayalatan also means to move, to separate yourself. And they saw that he was getting ready to move away from his markaz. Markaz is from rakaza yarkuzu rakzan, and rakaza means zameen mein gaad dena. You have a spear, you stick it into the earth, is called rakaza. And markaz is that place where you dig that and stick that spear or that flag, and that area says that this flag is for this place is mine. So markaz is the place where you stick that flag or that spear or that sword or that stick. So from there, markaz is used for some place where you settle down. Tablighi markaz, because the Tablighi Jamaat settles down there. Akabir come there, and there's bayanat and mashwaras and everything. It's like the Tablighi Jamaat's command center, and everything is instructions are given from there. So he was sitting on that place in the middle of the gathering. So Jamaat saw that he's getting ready to move away from his settling place where he was nicely settled and sat properly. To adkhala minhum kullu minhum yadahu fi jaybihi. They all put their hands into their jayb. Jayb is normally translated as bosom. Why? Because they used to have their jayb over here. Like I have a pocket over here in my sadri, and I take out something from there and give it. So they used to have pocket over here. That's why it's called jayb. Otherwise, jayb means the opening from where you wear your jabba and your kameez and your coat. So they used to have pocket inside, not outside. We have a pocket here outside. They used to have it inside. So jayb is then used for the meaning of pocket. Okay. Otherwise, literally it means the opening from which you wear your jabba is called jayb. But then because they used to have money in there and pocket inside there, like Hazrat Pir Sahib came. You might have seen Hazrat Pir Sahib, Pir Talha Sahib. He used to have a pocket over here. When he needed something, he would put his hand inside and then take it out from there. So everything he used to have, इतना बड़ा लबाचा, जैसे मेरा पॉकेट है ना लबाचा है इसमें, तो पीर साहब को भी सब भरा रहता था इतना बड़ा, सब उसमें कागज वागज पैसा वैसा सब उसमें, कोई पैसा दे तो पीर साहब यूं करके डाल देते थे, फिर जब जरूरत पर अंदर से निकाल के देते थे. Pir Sahib didn't know how much is inside.
वो जो आया अंदर डाल लिया, जरूरत पड़ी निकाल लिया। भोले भाले आदमी थे बेचारे हजरत पीर साहब। एक दफे पीर साहब का मक्का शरीफ में जेब कर दिया। somebody cut his pocket and stole everything. So I asked मौलाना मोहम्मद अली मनियार साहब कितने पैसे थे उनके जेब में। उन्होंने कहा अगर उनको पता चले कि उसमें कितने पैसे थे तो उनकी विलायत सल्ब हो जाए। वो अल्लाह के वली न रहे, पता ही नहीं था उनको उसमें कितना आता है कितना जाता है। वो अल्लाह की तरफ से आता था, अल्लाह की तरफ से जाता था, अल्लाह उनके खर्चे पूरे करते थे। तो उन्होंने अपना हाथ डाला अपने जेब में और फ़अफ़अम लहू, अफ़अम युफ़इमु इफ़आमन के माना भरना, एंड फिल कर दिया। मलअ यमलउ सजलन मिन सैबिही, सजलुन मीन्स पानी की भरी हुई डोल। A bucket full of water is called sajlun. An empty bucket is called dalun, but a full bucket is called sajlun. ओके जी, तो उसकी एक डोल भर दी। मीन सैबिही, सैबुन जमा सुयूब मीन्स अता एंड गिफ्ट एंड बख्शिश। So they filled for him a bucket of their gifts. Saba yasibu saiban means to walk swiftly. From there, it's used for gifts. وقال and said, इसरिफ हादा फी नफक़तिक। सरफ़ यसरिफु के माना फेरना। यहाँ पर उसको फेरने से मुराद उसको इस्तेमाल करना, यूज करना। यूज दिस फी नफ़क़तिक इन योर एक्सपेंसेस। अनफ़क़ युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़न खर्च करना, नफ़क़तुन जमा निफ़ाक़ुन नफ़क़ातुन expense and in your daily इस्तेमाल। औ फ़र्रिक़हु, फ़र्रक़ युफ़र्रिक़ु तक़सीम करना, to divide, distribute or distributed ala rufqati। Rufqa is plural of rafiq, on your rafiqs and on your क्या कहते हैं साथीज and friends। فقبله منهم مغضيا, he accepted from them with half closed eyes। قبل يقبل قبلا قبولا, कबूल करना। अन अग़दा युग़दी पीछे आया था ना, आंख बंद करना, तो उसने आंख बंद करके यानी ऐसे ही करके चलो ठीक है चलो आपने दिया तो ले लेता हूँ, वरना तो मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने दिया ही है तो क्या करूँ, आपको खुश करने के लिए मैं ले लेता हूँ। तो बाज़ आदमी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे नहीं चाहिए लेकिन उनको चाहिए अंदर से। So he wanted it, right? He needed it, but he said it with half closed eyes, half hearted। कबूल किया उनसे हाफ क्लोज्ड आंखों के साथ और चला उनसे तारीफ करते हुए। वजअल युबद्दिउ मन युशय्यउहु लियख्फा अलैहि महयउहु व युसर्रिबु मन यतबउहु लिकय युजहल मरबउहु। He began to bid farewell to those who wanted to escort him so that his route would be hidden from them, and he began to disperse those who followed him so that his residence is not known. جعل بمعنى شرع، أفعال مقاربة. يودع ودع يودع توديعا رخصت करना, to bid farewell. شيع मुशायत करना, to escort. लियख्फा अलैहि खफी यख्फा मख्फी रहना। महिया के माना अत्तरीकुल वासिअ, चौड़ा रास्ता। एंड युसर्रिबु अलग करना, सर्रब युसर्रिबु अलग करना। मन यतबउहु जो पीछा करता, whoever followed him, तबी यतबउ। लेकिन युजहल जहील यजहलु जहालतन, to be not known। and मरबा meaning manzil is maqam, his house, his residence, where he spends मौसम रबी'। रबी' means spring। So marba and is normally used for spring house. People have holiday home, so they have maybe in Spain or in Tunisia or Malaysia, they go there for holidays. So he began to disperse everyone so that his abode and residence is not known। आगे قال الحارث بن همام, बाद में पढ़ना, शुरू से तर्जुमा कर लो। You instruct people to do good and you tear apart its limits, and you stop people from evil and you do not stop yourself, and you turn people away from zulm, then you yourself cover it and do it, and you fear people whilst Allah deserves more to be feared. And then he prayed this nasheed and he sung this poetry. Woe unto the seeker of the dunya, he has turned towards dunya, he is leaning and careering. He does not come to his senses because of his love for it and because of the excess of that love.
Had he known, then a drop would be sufficient for him from what he seeks. Then he laid his dust and he dried his spittle. He let his spittle and his took subside and dry. And he took on his arm his water bottle, and he took under his armpit his staff. Then, when the company gazed at his uprising and saw his preparation to move away from his settling place, they all thrust their hands in their pockets and filled for him a bucket from their gifts, and said to him, use this in your expenses or distribute it among your companions. So he accepted it from them with half closed eyes, and he turned away from them whilst praising them. And he began to bid farewell to those who escorted him, so that his route may be hidden from them. And he began to separate and disperse those who followed him, so that his residence is not known. हो गया? जब ऐसे कर लो उर्दू में, तू नेकी का हुक्म देता है और खुद उसकी बाढ़ को फाड़ देता है। तू लोगों को बुराई से रोकता है और खुद नहीं बचता, और तू लोगों को जुल्म से हटाता है, फिर तू उस पर छा जाता है, और तू लोगों से डरता है जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तू उससे डरे। फिर शेर पढ़ा, हलाकत हो तालिबे दुनिया के लिए, मोड़ दिया उसने दुनिया की तरफ अपने मैलान को, होश में नहीं आता दुनिया के इश्क की वजह से और उस इश्क के आगे बढ़ जाने की वजह से। हालांकि अगर वो जान लेता तो उसको थोड़ी सी मिकदार काफ़ी होती उससे जो वो तलाश कर रहा है। फिर बेशक उसने अपने गुबार को चिपकाया और अपना थूक सुखाया, और अपने मशकीज़े को बाजू पर लिया और अपनी लाठी को बगल में दबाया। फिर जब जमात ने देखा उसके सिमटने को और देखा उसके तैयार होने को अपनी जगह से हटने के लिए, तो उनमें से हर एक ने अपना हाथ अपने जेब में दाखिल किया, फिर भर दी उसके लिए एक डोल अपनी बख्शिश से, और उसको कहा खर्च कर इसको अपने अखराजात में, और या तकसीम कर दे इसको अपने साथियों पर। तो उसने कबूल किया उन हदाया को उनसे आंख बंद करते हुए, और मुड़ गया उनसे तारीफ करते हुए, और वो रुखसत करने लगा उसको जो उसकी मुशायात करे, ताकि उसका चौड़ा रास्ता उस पर मख्फी रहे, और वो अलग करने लगा उसको जो उसके पीछे पीछे चले, ताकि उसका घर नामालूम रहे। बस आगे बाद में पढ़ना। हारिस इमाम ने उसको फॉलो किया, फिर पकड़ा उसको कि वो क्या कर रहा है। चलिए जो बाद में पढ़ेंगे इसको।